will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This is basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted for the students who are in the range of class 8 to 10. Finally, 2 students from each of the state and union territories in Narendra Modi ji. So today we have amongst us nearly 84 plus school students who are here in the mission operations complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान-1 प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भूविज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अभियान के इस मुकाम पर याद कर लें जब इस उपग्रह को GSLV मार्क 3 M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 900 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को एक 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह ताकि हम यहां से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब 11 क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण। by 39,000 kilometers around the Earth. So once the orbit of the Chandrayaan-2 was 39,000 kilometers with a perigee of 170, as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed 4 earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayaan-2 being raised around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase and it is proceeding towards the moon's orbit, and very shortly you will see the Chandrayaan-2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon, and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers, and then subsequently using the propulsion system of the Chandrayaan-2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. In the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers. The orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the down the altitude
to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers. By 100 kilometers, 30 kilometers is the minimum height above. And I think we are very close to the event when the Vikram lander. Roughly around 6 minutes to go before we start the Pawan descent operations. जी हाँ, हम करीब करीब उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। किया है उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6 कक्षा में 5 मैन्यूअर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 5-4 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन के